हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले प्लीज़ फोकस ऑन दिस फिगर। आप क्या देख रहे हैं? ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें दो कंपार्टमेंट्स हैं and these two compartment, one is this compartment where we have kept the solvent molecules, and there is another compartment which has the solute molecules present inside the solvent molecules. That means this is the semi permeable membrane which is separating the solvent from the solution, right? Now, semi-permeable membrane is the membrane which allows only the selective substances to pass through it. Now, listen, look at this figure. Here in the solvent side, the solvent surface is experiencing the atmospheric pressure as well as the vapor pressure, which is due to the vaporization of the solvent molecule. And on the solution side also, we have the atmospheric pressure and the vapor pressure of the solution. Now, from your previous knowledge of the colligative properties, you already know that the vapor pressure of solvent is greater than the vapor pressure of solution, because you have studied that in the solution, if there is a non-volatile solute which is not contributing towards the vapor pressure, it reduces the vapor pressure of the solution. So vapor pressure of the solvent is greater than the vapor pressure of solution. So what happens here is that because here this side the vapor pressure of the solvent is more, here this side vapor pressure of the solvent is more than the vapor pressure of the solution, and P atmosphere of course is same on both sides. So what happens, due to the more vapor pressure of the solvent molecules, they start moving through this semi permeable membrane from here to here. Why this happens? Because vapor pressure of the solvent is more than the vapor pressure of the solution. So this spontaneous flow of the solvent from this dilute solution, because solvent is almost, we can call it as a dilute solution, there is no solute present in it. So the spontaneous flow of the solvent from the dilute solution to this high concentration solution. Why we are saying high concentration? Because the solute particles are mixed here. So the solvent starts flowing from here to this solution side through a semi-permeable membrane. This is called osmosis, right? इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं जब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उस तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब बच्चों, अगर हम ऐसा कुछ करें कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है उसी के इक्विवेलेंट हम इस साइड से एक एक्सेस प्रेशर अगर हम अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई एन एक्सेस प्रेशर, ये एक्सेस प्रेशर ऐसा हो कि जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है जो यहाँ से इस साइड से इधर हो रहा था, ये उस फ्लो को जो है फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू जो सॉल्यूशन फ्लो हो रहा था, तो अगर हम ये सॉल्यूशन साइड पर एक एक्सेस प्रेशर अप्लाई करें कि वो
जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसका डायरेक्शन ही अगर वो रिवर्स कर दे फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड टू द सॉल्वेंट साइड, अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्स osmosis. So what is the reverse osmosis? That when an equivalent excess pressure is applied to the solution side so as to stop or reverse this flow of solvent molecule through semi-permeable membrane into the solution, and this excess pressure is called osmotic pressure. Let's again look at this figure कि हमने क्या किया, ऑस्मोसिस में क्या था, सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था सॉल्यूशन साइड पर क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट की कम है, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्मोसिस था, यानी फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट टू द मोर कंसंट्रेटेड साइड। लेकिन अगर हम ये जो सॉल्यूशन साइड है यहीं पर एक एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दे कि वो ऑस्मोसिस का फ्लो की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दे, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस में जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये एक एक्सेस प्रेशर है जो हम सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई करते हैं और वो ऑस्मोसिस का फ्लो रिवर्स कर देता है। इसको बच्चे हम पाई से इंडिकेट करते हैं और पाई जो है दिस इज इक्वल टू CRT। लेट अस सी व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज टर्म्स हियर। C here is the concentration of solution, here it is the concentration of the solution. R here is gas constant and T here is temperature। ठीक है बच्चे, गैस कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हम लेते होते हैं 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और जो हमारा यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी हमारा केल्विन की यूनिट में रहेगा। ठीक है, अब ये जो टर्म कंसंट्रेशन है इसमें पाई इज इक्वल टू CRT, तो यहाँ हम C को हम लिख सकते हैं N2 अपॉन V इंटू RT। यहाँ बच्चे N2 क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V है हमारा वॉल्यूम। हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बच्चे, इसको हम क्या कह सकते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, ये जो है कैपिटल M क्या है, हमारा मोलर मास है, इनटू RT अपॉन V। तो बच्चे ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया फॉर द ऑस्मेटिक प्रेशर। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कई बार हम मोलिकुलर मास की वैल्यू निकालते हैं, कई बार हम मोलर मास की वैल्यू जो है वो भी निकालते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसकी क्या एप्लीकेशंस है अब हम वो देखते हैं। So let us see what are the applications of the osmotic pressure. The first thing is that osmotic pressure is widely used for measuring the molar mass of the solute. कैसे, अभी आपने देखा कि पाई इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V इंटू R इंटू T। सो जो ये मोलर मास है कैपिटल M किसी सॉल्यूट का निकालना हो,
हम वो फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। दूसरा है कि इट इज़ वाइडली यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and it has often been asked in the CBSE exam कि why it is widely used to determine the molar mass of the proteins and other biomolecules. So, as I was telling to you that it is widely used to determine the molecular mass of proteins and other biomolecules, and what I have told you is that this is a very very important question, that why uh, the osmotic pressure method is the most preferred method. The reason is that significantly very large value of the pi osmotic pressure is obtained even for the very dilute solutions at room temperature. See, osmotic pressure is measured at the room temperature, but if we want to measure the molar mass of the some protein by elevation in the boiling point, the temperature will be high, and biomolecules are very sensitive at high temperature. You all know that proteins जो हैं they get denatured, and since biomolecules have poor stability at high temperature, so it is the most preferred method for determining their molecular mass. So this question is very very important. And as regards the osmotic pressure, there are some more things to do which we will do in the next video. So if you find this content useful, please like and share it with your other fellow students also. Thank you for watching.